when you listen to people, most of what they want to say पहला सेंटेंस में क्लियर हो जाता है, बाकी 5-6 सेंटेंस वो लोग टाइम पास करते हैं. एंड देन यू वेट देयर एंड यू थिंक कि कब खत्म होगा, मेरे को तो समझ में ही आ गया ये इंसान क्या बोलने वाला है. फिर तुम चूतिया की तरफ अच्छा ऐसा करते रहता है यार. ऑफन टाइम्स ये भी होता है ना कि you start saying something and तेरे दिमाग में बहुत कुछ भरा पड़ा होता है and you are like मेरे को सब कुछ बोलने का है, and सामने वाला शायद समझ भी जाए 1-2 sentences में, but you have this preconceived thing ना कि मेरे को तो इतना बोलना ही है. This is the amount of information that I want to give to the other person. मिल गया ना मेरे को, regardless of what they want to hear. An interesting thing मैंने तेरे को share भी करा था, in which नहीं I did share it to you, bro. I did share it to you. I'm sure I shared it to you. नहीं. How could you say I didn't share it to you? I just feel like it. Today I have a very bitchy energy to you. Yeah. You came in with some sort of gay energy today. Maybe it's my pants. Yeah, I guess it's your pants. But you came in with that energy. आज भी थोड़ा सा पता नहीं, आज मैं तो ऐसा होता है ना कभी मतलब तुम किसी को कुछ समझा रहे हो, स्पेशली विद गर्ल्स, एंड दे आर लाइक कि नहीं, एंड नहीं के बाद कुछ बोलो यार, कुछ बोलो, एक इंसान को पता चले क्यों कैसे. So yeah, be ready. Anyway, bro, I went out on a date recently. अरे yes, तुम तो बोला था no brother, this year only focus. That's something that you said, bro, on the podcast. I might have said apart from the podcast. But हाँ, so it's funny right, तुम ऐसा अलग ही पर्सनैलिटी बन जाते हो और यहाँ पे मैं तुमको ऐसा चूतिया बोलते, लोग बोलते यार शुभम तो बहुत अच्छा है यार. Exactly. But it's not like that. What? It's not like that because I'm dating that makes me a bad person. No. Full on date. इसको डेट करो, उसको डेट करो. मैंने की मैं just बोल रहा हूँ, you were like कि इस महीने this year I will only focus on my work. ये bro, this month I didn't even get to work as such. क्यों? पहले तो तेरे वजह से. मेरे वजह से मैं क्या किया? पहला जो पॉडकास्ट था वो होने वाला था काफी पहले, बट यू केप्ट ऑन डिलेइंग इट एंड उसके वजह से वो लेट आया. मेरे वजह से मेरे पे मत ढकेलो. मैं क्या डिले किया? अरे चूतिया इंसान, मैं क्या डिले किया? तुम डिले किया. मैं कैसे डिले? हम लोग जो डिस्कशन करे दोनों को पता है एक्चुअली यार ना कौन डिले किया. मेरे को पता नहीं. जो इट गॉट डिलेड, नॉट बिकॉज ऑफ मी, because of circumstances. ये तुम जैसे लॉन्डे भी रिलेशनशिप में आके मजा आता है. तुम जैसे लॉन्डे, it's like at some point you are like, अच्छा, this is not a debate worth getting into. So yeah, just circumstances, dude. Last trivial, dude. So yeah, क्या डेट पे गया तुम? Yeah, with this trans woman. With this trans woman. Would you date a trans woman? Depends on the trans woman. Would you fuck a trans woman? Depends on the trans I recently woman. Talked to a trans woman though. अच्छा, just to date her or to fuck her? No. I thought she was a lady. And she turned out to be she was pretty attractive. And like मेरे को बातों से समझ जाना चाहिए था. She was overtly horny. It's just like, I'm not being sexist. शुभम हो जाएगा कैंसर, मजा आएगा. Yeah, normally you don't see girls being overtly horny in the first text, right? कभी कभी हो जाता है. Once in a blue moon you get a text like, do you suck ass? You get that? But mostly not, right? So this chick later turned out to be dude. Was being overtly horny. Okay. And then he was like, I could suck you. And that's when I realized that when people say like it doesn't matter what you feel inside, but when a trans woman is horny, it's the man inside them who is speaking, right? So what they feel inside, what they are inside, feel inside is relevant because inside they are men. That's what they say, bro. What I feel inside is relevant. Yeah, exactly. I too support it. They support trans people basically. Of course. I support like जब ऐसा टाइप का I support trans people with pussies. Like I support trans women with pussies. I support everyone. क्या फर्क पड़ता है तुमको? तुम्हारा बाप का कार है वो लोग. And in general मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. But if I have to engage, I engage as in whatever, like fuck them. I don't know. Engage in some romantic way. It has to be a trans woman who's gone through that fucking whole procedure to get a pussy. A trans woman who looks like Deepika Padukone or a real woman who looks like Khali. Khali. The great Khali. Fucking 6'7" and yeah. this thing. Yeah. Like whose name is ugly person.
स्वराज। पता था, मेरे को तो पता होता, मैं तो बोल दिया। क्रिएटिविटी के नाम पे 0 है, जो दोनों सेम जोक मारेंगे। मेरे को, मैं तो बचाने के लिए किया आपने को, मैं तो शील्ड बनाया आपने आपको। सो अगली पर्सन फरदीन, मत बोलो यार ऐसा इसको, ही इज अ गुड रैबिट। सो या, सो ऐसा अगली पर्सन का नाम बोलो, कोई भी, बॉलीवुड, हॉलीवुड। नवाजुद्दीन। ओके, नवाजुद्दीन इज अगली। नवाजुद्दीन और जाकिर, he's who is not the- ugly? Nawazuddin or Zakir was ugly. Zakir is pretty, bro. Or you fuck Zakir? Like if it was a girl, हाँ, yeah, dude. Zakir. Okay, एक And then he would ugly be like ऐसे कमर पे ऐसे हाथों से कुछ लिख रहा है शायरिया में। बहन का लो। Yeah, so would you fuck a like a trans woman? ट्रांस वुमन होगा, ट्रांस वुमन, मैन से वुमन हुआ, हाँ ट्रांस वुमन। आधा टाइम तो अपने को सीखने में लग जाता है ब्रो। आई वाज लाइक हाँ ठीक है 4 जेंडर ना, हाँ 4 जेंडर, नहीं 12, ठीक है 12 जेंडर, हाँ ठीक है 12 जेंडर। एंड देन यू आर लाइक 70 ब्रो, ये कब हो रहा है यार? ओवर द लास्ट 3 years they have increased like 30 genders. 30 जेंडर नए ऐड हुए भाई। लाइक पता है, लाइक एक टाइम के बाद, लाइक इवन लाइक व्हेन यू आर फ्रॉम दैट कम्युनिटी, देन आल्सो यू समटाइम्स, आई एम श्योर ब्रो, उनमें से किसी को भी उठा ले। एक तो जब भी मैं बोलता हूँ ना, 2 फ्रेजेस है, एक तो उनमें से और एक है these people. Whenever you say these, पता नहीं एक अलग ही sort of segregation हो जाता है। It seems like कि आगे जो भी आने वाला है, it's gonna be something जो थोड़ा racist होगा या sexist होगा। like these people, जब तुम कुछ बोला तो बहुत पहले कुछ बोल दिया हो, अभी तुम अपने आप को मत रोको। But हाँ, a trans woman who looks like Deepika Padukone or ugly as or Nawazuddin in a shape of a girl, who would you fuck? Nawazuddin as a girl would be a trans woman, bro. नहीं, a ugly ass girl or just a ugly ass girl or a beautiful trans woman. Who do you fuck? Beautiful trans woman. Good. Does she have pussy? No. Ugly as. एकदम ही ugly. Yeah, एकदम ही ugly, bro. एकदम ही ugly. Yeah. Have you dated like ugly people? Dated? No. Ugly. Bro, I've seen some of your dates. You're like no, saying outright lies, bro. ये तुम्हारा आंखें है जो उनको ugly बनाता। मजनून की ऑब्जेक्टिविटी भी कुछ होती है यार। नहीं, सब्जेक्टिविटी आई गेट इट, ठीक है, सबकी आंखों में कोई ना कोई सुंदर, बट ऑब्जेक्टिवली आल्सो आई कुड से मल्टीपल पीपल दैट यू डेटेड are ugly. Name one. I mean, we can't name them, bro. Name calling would be of course rude, but like you will beep it. एक बार बोल दो, फिर एक बार तो बीप कर ही सकता है। कौन? That girl is not ugly. She's ugly, bro. Like I can say was ugly. Who's that short good? I don't know. Let's not take names, bro. Yeah, so maybe one. Like ugly, कितना ugly? तुम्हारे तरह? Yeah, मतलब मेरे तरह तो it's still be above average. Yeah, bro. Like, I mean, as a guy, as a girl, as a trans woman. As a trans woman, I don't. As a trans woman, you would be ugly. As a guy, you would be average. Most people are ugly, bro. Like, see, nahin. As a trans woman, there are some beautiful women. Some, but that's why I said most, and I didn't say all. Fucking learn English, bro. ठीक है. Yeah, so क्या बोला था मैं? Wait, you'd be ugly, bro. You'd be ugly. नहीं, मैं That's what you were saying. I think as a woman, you would be ugly. Okay. As a man, you are average. Decent. Yeah. Decent to look. Mm-hmm. Yeah. Like if he has money, he could fuck supermodels. No. Dude. If he has money, he could fuck supermodels, bro. कितना हो यार? अभी लाएगा, पैसा लाएगा, तुम भी चोद देगा मेरे को. Exactly, bro. Everybody has a price. Yes, everybody. Yes, exactly. Especially the left people. There was this girl I was dating. तुम्हारा डेट के बारे में पूछा ही नहीं ना, कितना rude है ना. No, we'll get to it. Don't worry. So I was, and she was a pretty leftist, एकदम ही left. And she was like, she works in an NGO, and she was like, and she has left a good jobs. Okay. जो अच्छा खासा उसको pay करता है, according to her. पता नहीं कितना. But she said that I have left that because I want to work for the society. ये वो. फिर मैं बोला कि and she works for an NGO now. Yeah, and she wants to work for the bigger NGOs.
अभी वो लोग छोटा मोटा उसमें करते हैं, बट हर गोल इज लाइक टू व्हाट्स अ बिगर एनजीओ? आई डोंट लाइक मेन्यू की जो ज्यादा पैसे कमाता है। नहीं, ज्यादा वर्ल्ड वाइड सर्विस करता है। मैं अच्छा। साउंड्स लाइक अ प्रोस्टिट्यूशन। Yeah. ज्यादा वर्ल्ड वाइड सर्विस करता है वो लोग। बट हाँ, सो शी वाज शी मस्ट वर्क फॉर अ हायर एनजीओ एंड समथिंग लाइक दैट। सो आई सेड दैट कि what if 20 lakhs per annum Okay. and you have to work in a corporate job and something like that who pollutes the industry or something like that. You're She was working for Tesla, bro. yes, so she said that कि yes. Yeah. I was like हर एक लेफ्टिस्ट का कुछ कीमत होता है, राइट? भाई 20 लाख तो फिर भी बहुत कम कीमत है यार। 20 लाख मैं तो फिर सोचा कि इस पे नहीं मानेगी तो मैं करोड़ तक लेके जाए। करोड़ तक कोई पैकेज हो तो फिर भी चलो सोचा जाए। मैं तो और कम में बिक जाऊं, मेरे तो है भी नहीं भाई, मैं तो फ्री में भी एनजीओ में ना करूं काम। मेरे तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोग उस दिन हम लोग का ब्रिज से आया था, हम लोग नया जो ब्रिज बनाया, इतना सोना लग रहा है ब्रिज पे। पहला बात तो एंड लुकिंग एट दिस लाइक क्या वाज लाइक एक बार, और फिर आई सेड समथिंग लाइक कि क्या बोला था, पेड़ काटो बेंचो। You said this. So I said that because और मैं there was a girl I was dating and she said that कि पेड़ सर के बनाओ बट पेड़ उतना पेड़ भी होगा। मैं like yes Yeah. ब्रिज के गया, पेड़ काटो उस काटो, क्या फर्क पड़ता है? And most of them like सामने बैठे होंगे एंड चिकन खा रहे होंगे, and then they would be like कि पेड़ मत काटो। इसलिए बहुत सारा एनवायरनमेंट का टॉपिक है जो जिसका मैं एग्री भी करता हूँ और मैं चुप ही रहता हूँ, क्योंकि एवरी नॉन वेजिटेरियन शुड शट अप व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट। Agreed. चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। और एंड दिस गर्ल एंड शी इज द एनवायरमेंट, क्या she is that which I can't say. Yeah, so she is that and फिर वो बात कर रही है ये पेड़ मत करो, and we went in a conversation for 1 hour or 2 hours about this. and मैं सुन रहा हूँ एक टाइम के बाद मैं like, and she is like भैया एक बटर चिकन एक्स्ट्रा बटर के साथ। and it was not butter chicken and we had something and when we're having that and we're discussing what flashes she has tried. मैं ही ट्राई नहीं किया, मैं तो 3 के बाद रुक जाता हूँ। and she was like she ate snails, she ate squirrels, sharks and sharks. How do you get shark meat, bro? Shark meat legal है क्या? लीगल तो नहीं है शायद, है शायद। अच्छा, under the table sort of deal. under the table sir। एक shark। एक shark। shark meat शायद लीगल है, मतलब I don't think so bro, shark meat legal होगा। लीगल ही होगा, अगली चीजें लीगल होता है, जैसे कि तुम लेकिन डॉल्फिन्स आर नॉट लीगल आई गेस, टर्टल्स आर नॉट लीगल, डियर्स आर नॉट लीगल, sharks are legal. I guess so, I'm guessing based on their शक्ल। तुमको अगर आज कोई खाना चाहे लीगल ही होगा। Yeah, humans are legal. Yeah, humans are legal. Yeah, of course. Yeah. So and she has tried everything, bro. And I was like, यार, environment. Don't just shut up. Just fucking shut up. Nature के रक्षक मैं भी हूँ। Exactly. Yeah. So tell me about your date. Yeah. So she was a woman. Yeah, she was a girl. Lady boy. What's the difference between a girl and a woman? Taylor Swift. अच्छा, if she was listening to Taylor Swift, she is like नहीं उसका गाना ना like क्या Swifties लोग क्या बेंचो पागल ही हो जाता है। Like I see she's a popular girl, but ऐसा basic as अच्छा she's a girl, she's a पता नहीं क्या है वो and there's a lyrics in a world full of boys he's a gentleman, उसमें बेंचो लड़कियां कपड़े फाड़ रही है, फिर क्या लिरिक्स लिख दिया यार, हो जाए यार बैड, इतना अच्छा ये वहां से कॉपी किया गया है ना, क्योंकि I've seen this a lot on like the apps जहाँ they are like I don't want a boy, I want a man. I'm sure they must have a definition of some sort. Man is someone who takes maturity. हाँ, maturity. Basically, yeah, I'm guessing. You're a boy. I'm a boy, bro. Yes. Some girl that I dated once called me Peter Pan, bro. Yeah. And then I looked up. Apparently, there's this thing called Peter Pan syndrome. हाँ, जो बड़े नहीं होते ना, बड़े हो जाते हैं बट मैं दिमाग से नहीं होते। वो हाइट की वजह से बोल सकता तुमको। नहीं, हाइट की वजह से तो नहीं बोला। नेपोलियन भी बोला था एक बार। Yeah, because I'm brave and short. You have a tiny penis and you are short. Napoleon had a tiny penis. How do you fucking know about Look that? at his picture. वो आपको कह ले कि उसका पिक्चर देखना, उसका टाइट्स में था and like he has a very tiny picture. And पता नहीं वो okay, and your eyes went to his penis. Yeah, yes. Because he's short. और क्या देखे मैं?
ऐसे देखते इन जनरल मेरे को ऐसे Face, bro. Like that, if that's the tiniest thing, that's the last thing you'd look on. नो बट समथिंग व्हिच इज बल्जिंग आउट थोड़ा सा फिर नजर थोड़ा थोड़ा कि नेपोलियन एक तो नेपोलियन Nah, bro, I don't think straight dudes should go there straight away. बट इतना एक छोटा हाइट का अगर इन जनरल मैं लंबा Are you bi-curious? नो Have you ever been bi-curious? यस Like, how did you figure out then? तो मेरे को लाइक कि वो छोड़ना नहीं है सेक्सुअली आई एम नॉट There was this dude that I was, as a YouTube पे I was looking up बाई on. क्यूरियस मतलब क्या है मेरे को तो समझ कुछ मैं हो जाएगा फिर लास्ट में बाई क्यूरियस इज लाइक कि यू आर So bisexual होता है, they know for sure. Bi-curious are like, मेरे को पता नहीं है, I might be bisexual. या पहले मैं था अभी मैं आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट What? things अच्छा, there was this dude, bro, वो 37 में जाके he got like gay. So like you never know. नहीं मेरे साथ Like you could be like 40 and you're like, dude, I like sucking dicks. नहीं Like सोचो ऐसा epiphany हुआ कभी उठ के रात को ऐसे बैठा हुआ है and you're like fucking sad and shit, bro. Like some girl broke your heart and you're like you've been dating her for like 5 years. And this like nice looking gentleman walks in, so side से जा रहा है and you're like fuck it, I want to suck dick. हो सकता है ना हो सकता है पता नहीं I don't know like you might also turn trans once like कि कुछ दिनों में as a lady, bro. I could do it just as a publicity stunt, पता है podcast के I लिए like podcast चला ही नहीं bro. We've posted like 100 episodes and it's Shubham not comes working. out. So I come out on the podcast. I'm like, and you don't get to watch it on YouTube. You'll get to watch it on Patreon. you're like कि अगर तुमको शक्ल देखना है उसका तुम्हारा शक्ल हमेशा blur रहेगा and if you want to see how he is now Yeah. then go to Patreon. People would be more interested in seeing what's down there. That you'll get to OnlyFans. So we'll have different accounts. सारे सोशल मीडिया पे है ब्रो. ये तुम्हारा $12 लेगा ये तुमको $20 exclusive content. हाँ, so you whatever this date I went out on. Yeah. So I started talking to this chick on some app. yes And then फिर 2-3 दिन के लिए बात करी. And then we decided to meet up. So the first date we met up and like the first date was great. Like she was funny. I was ठीक ठाक बैठा कहाँ मिलते हैं हुआ. ऐसे fancy बाजार Yeah, the fancy bazaar. I don't know like Fancy bazaar में funny girls like fancy bazaar में थोड़ा counter intuitive है, but there are a lot of like good looking girls in fancy bazaar. okay ठीक है I'm like GS road में हो सकता. So इनको context नहीं पता होगा, but GS road is like more affluent area and fancy bazaar is like roadside चीजें मिलती है उधर. But still girls go for that. Like pretty girls, like extremely pretty girls go for like cheap shit. हाँ exactly और फिर बोलती है कि अरे ये तो मैंने ये जरा सा स्ट्रीट पे जाओ Zara मिल रहा है. so you she was funny. Yeah, she was funny. It was fun. It was all great. And like first date happened and we were like, acha, let's meet up again sometime. So after 2 days, she texted me कि acha, let's meet up. So I went there and then फिर we were supposed to meet at some place. We went there, वहाँ फिर मिले नहीं. So we were like कि कहीं और चलते हैं. So we were going somewhere else and was like scooter पे बैठी हुई थी पीछे and I was riding and what the fuck? What? Riding पे हंस रहा था. What are you, fucking 14-year-old? It's funny. She was riding. Yeah. She was riding, bro. You were riding. I was riding too. Yeah. I ride fucking good. Okay, bro. Then she told me something about a friend. She was like कि अच्छा मेरे दोस्त मायांग गए हुए हैं. अच्छा. Mayang is a place for people who I don't know. know. I went for there. people who don't know, bro, you might have went there. ठीक है. ये खुद के लिए नहीं हो रहा है बस. So for people who don't know, Mayang is this place जहाँ like India का hub है. It's for black magic. Yes. Just as a joke, I said कि अच्छा मेरे को भी काला जादू आता है ऐसे. ठीक है. I am Shivam Chakraborty. Just as a joke, I mentioned this thing. She laughed it off थोड़ा है ना. Like फिर I started adding details to it and mostly I found कि अच्छा when you crack some joke like that,
you like break it off. At some point, you build the tension up, and then when the tension is at the highest, you break it off. That's where the funny comes in. I leave it. I just leave it there, and फिर उसको निकलना है तो निकल जाए. Then I started adding details to it. I was like, she was like, कैसे करते हो? I was like, अच्छा, you get to have a voodoo doll, and then फिर जिसके ऊपर करना है, you get to have their hair, and then तुम उसको बांधते हो. Then there are some sort of ingredients that you do it with. I just made up shit जो मैंने pop culture में सुना हुआ था काला जादू के बारे में. And she got interested. She was like, अच्छा, okay. And then we reached the cafe. So we went to the cafe, we sat down, we had a coffee, and we were talking. इधर उधर की कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है? And then अचानक से all of a sudden she is like, अच्छा, like सही में करते हो तुम काला जादू, ठीक है? She couldn't get over it. I was like, yeah, सही में. And she was like, कि last किस पे करा था? I was like, तेरे पे. She was like, that's so fucking weird. Why do you do that? I was like, अच्छा, if you don't want to get involved into this, I could break the spell बाद में घर जाकर. I could do that. I just did it because काफी टाइम से try नहीं किया था, and I wanted to try my skills. That happened. We went home. She again texted me, were you serious with that shit? I'm like, yeah, of course. Okay. Cut to next day. I'm talking to my brother, ठीक है? And she texted me कि अच्छा, did you break the spell? I was like, I tried it, dude, but it didn't happen. ठीक है? She's dumb or what? I don't know, bro. कितना साल की थी वो? 14 साल की लड़की के साथ तुम घूम रहा है. She's 22, bro. अरे and then फिर मैं भाई से बात कर रहा हूँ, 8-10 मिस कॉल आ गए ब्रो उसके. मेरे को लगा क्या हो गया ब्रो, इतनी क्या गांड फट गई. सो भाई से बात करा मैंने, 1 घंटे फोन रखा, एंड देन आई कॉल्ड हर. शी वाज लाइक, डूड, डिड यू ब्रेक द स्पेल? आई वाज लाइक, डूड, आई ट्राइड इट. She was like, अच्छा, that's really bad. अगर नहीं होगा तो मेरे को ही दिक्कत होगी ना. अरे नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Then she was like कि अच्छा, that's so weird. Like, you're Marwadi. I've never heard कि like Marwadi people do black magic. Bengali. She went into stereotypes, bro. She's like, अच्छा, you're not even Bengali. How does that make sense? I was like, yeah, like Marwadi people do it too. She was like, where did you learn it from? कैसे तुमको कैसे लगा? असम में हम लोग कब्जा कैसे किया? काला जादू. Yes. She was like, where did you learn it from? I was like, dude, मेरे फैमिली में ये प्रथा चलती आ रही है. ठीक है, बाप बेटे को सिखाता है, बेटा उसके बेटे को सिखाता है, हमेशा से ये चले आ रहा है. She's like, okay. She's like, how did you feel comfortable telling me this even? I was like, I don't know, what could you do? And she was like, अगर मैं किसी को बता देती, bro, I kid you not, मेरे दिमाग में जोक था, but now that in hindsight I think about it, it could have been really scary. What I said was, अगर किसी को बता देती, there would have been consequences. अरे I said it in this tone, bro. Now that I think about it, it's not even funny. And she was like asking me questions ऐसे और क्या. She went silent. ठीक है. I was like, अच्छा, forget it. I'll break the spell आज, and you won't have any issues. And then फिर रात को 2-3 घंटे मैं अपना वीडियो गेम खेल के कुछ करवा के 2-3 घंटे बाद उसको टेक्स्ट कर देते हो randomly at some random time, I broke the spell. And she is like, अच्छा, fine, that's great. I was like, I hope this doesn't change things between us. She said, I don't know, dude, I'm really scared. I like, but I hope this doesn't change things. She's like, I hope that too. It's funny. And then I said something and she left me on scene. Even after that, like it's been like 4-5 days since this happened. She didn't अभी तक बात नहीं कर रहा उससे. She left me on scene. I didn't text her. Like, ये भी मेरा ही काला जादू का असर है जो तुमने मेरे को ऐसा किया. Bro, I've realized something. You always, I mean, you and other people call me weird for some reason. I'm not weird, no, but I don't call. I'd say you're odd. Yeah, fucker. That's almost the same thing. Okay, differentiate between odd and weird. Do it. Google, bro. What do I do? It's almost the same thing. No. Weird is something. Weird is odd one out. Exactly. Yes, that's the difference. But whatever. People call me that and I've realized I'm not weird, but I'm sort of retarded thoda. Yeah. Because autistic. Who would do this for a joke that exists in their head? किसी को नहीं पता, ठीक है, कि मेरे दिमाग में ये joke है कि bro, I do black magic and shit. And this just exists in my brain, bro. किसी को पता भी नहीं चलने वाला है. You are that odd. You are just
worse than that, which I'm is a not content saying creator. I'm odd. I'm saying I'm retarded. So yeah, so I think you are not retarded. You are just worse than that. You are a content creator who thinks that अगर मैं ये बोलेगा तो मेरे को podcast में मेरे को बोलने को मिलेगा. Nah, bro, And that's then not even a content creator thing. Like you said this thing. You're making content out of it. Yeah, but I make content out of everything that happens in my life. Yeah, then you It's thought not अगर मैं ये like- बोलूँ तो ये तो फिर But like you've seen me, right? I've dated girls आज से 3-4 साल पहले where I've done stuff like that, wherein I go like really still you think कि मैं forward 3 with साल the बाद joke. podcast अगर करूँगा. Okay, visionary. Elon Musk, man, sure. Yes, of course. You're Marwari. Business तुम्हारा है सब पैदा. I get that, but that's also like people say कि that's also a writer thing. That's also like filmmaker thing. That's an artist thing. People say. Yes, it's a content creator thing. Content creator specifically कहाँ से है भाई? I don't know. Do you see everything as a content now? Like do you see films and you're like great content? मुझे तो बहुत नफरत है ये शब्द से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. Yeah. But I've seen I have the same issue with influencers. influencer. The word influencers. मेरे को तो समझ में नहीं आता जो जिस लोगों को influencer बोलते हैं लोग. They don't have any sort of real Exactly. influence. They're like if you say entertainer, I'm Yeah, entertained I looking get at it. your ass. Even It's not content creator, I get it. Yeah, exactly. If you're making content and I'm watching it, and you're a creator, I'm a consumer. Yeah. And if you are an entertainer, you're showing me your ass, and I'm looking at it, and I'm entertained. Yeah. How is you showing me ass or you dancing? Anything? Yeah. Good dance Yeah. is making I'm influenced by that. Yeah. कि क्या गांड दिखाया मैं भी बड़ा होके ऐसा गांड बनाऊंगा. And you sort of do get influenced to jerk off. That's one influence. And that's तो it's very ऐसा domino effect कि तुम गांड दिखाया मैं jerk off किया. It's just But what else is influence, bro, if not that? Of course. And if you could like influence someone to go to the washroom and fucking stroke their dick, Yes, nothing is more influential. and than what's more influential? Yeah. Exactly. That's great influence. Exactly. Oh, by the way, तूने गांड से याद है कि वो तारक मेहता देख रहा है रिसेंटली तुम? नहीं. उसमें उसका आजकल क्या होता है चूतिया की तरह गाना बनाते हैं वो लोग. सो सीन ये है कि ये तुम्हारा आधा घंटा का एपिसोड होता है. Yeah. सो जैसे कि आज इस बार पोपट लाल का बर्थडे होता है तो वो लोग गाना बनाता है. Why are you watching that show अभी? आई एम नॉट वाचिंग इट, जस्ट मेरा फीड में आया. ठीक है, मैं वो तभी भी देखता हूँ. तारक मेहता इज लाइक खाना के साथ वही तो क्या ही देखे मैं कहाँ भी मेरे को इधर तारक मेहता नहीं होता. Yeah, it's either Taarak Mehta if the family is sitting or The Office, मेरे लिए at least. अच्छा. Yeah. मेरे लिए तारक मेहता, हम लोग घर के तारक मेहता. बट तारक मेहता का भी वो एक सर्टेन एपिसोड्स है हम लोग का कि लेकिन अब आपको थोड़ा सेक्सिस्ट हो सकता है. बाप को जब भी महिला मंडल का कोई भी ऐसा सीन आता है वो लोग बैठ के किटी पार्टी, बाप को ऐसा पसंद नहीं आता. हटाओ यार ये सब, हटाओ यार क्या देख रहे हो. I guess that's every mother, bro. I don't know. And they are not funny also. They are like fillers. जब भी किटी पार्टी करते हैं दया नहीं होती तो बबीता इट्स लाइक मजा नहीं आता फिर. और फिर उसके बाद बाप को गुस्सा आता है तारक मेहता को देख वो अच्छा जिसके नाम पे शुआ उसी पे गुस्सा आ रहा. इसलिए उसका लास्ट में जो वो एक पुराना एपिसोड में वो ज्ञान देता था ना, कौन से ज्ञान? तारक मेहता लास्ट एपिसोड में आता था और बोलता था स्वच्छ रखो भारत को, ये सब क्या नहीं वो देखते हैं उसके साथ क्या होता है. तो पहले से अगर देख रहा है तो वो तो एकदम प्रीकैप थोड़ा सा दे देता था. हाँ इसलिए बाप को बोलते यार चूदिया यार ये क्यों आ रहा है यार 5 मिनट में, या फिर खत्म कर दो यहाँ के बाद या फिर बढ़ा लो. सो एंड रिसेंटली दे आर जस्ट सिंगिंग सॉन्ग्स. एंड रिसेंटली उसका कोई एक जैसे एक टाइम में शेरू आया था. हाँ there is नया बिल्ली आई उन लोग बोल रहे थे. yeah so they are just singing song and the song is this is the one you sent me, right? yeah so the song was कि प्यारी दुलारी पम पम तुम्हारी लाइफ में मेरा वेलकम and the cat's name is Pom Pom. Yeah. And the whole step and I don't know if you can insert it here like कि वो copyright ले, but I will give you the hook step. Yeah. So ऐसा टप्पू आता है प्यारी दुलारी पम पम लाइफ में तुम्हारा वेलकम ऐसा करते हैं वो लोग. I don't know they have done it intentionally or what. Yeah. Because I'm sure it's intentional. Like मेरे को क्यों लगता है पता है ये. And that's like all over Instagram, right? This word.
And we know what it's a slang for. It's not like कि लोगों को नहीं पता है. And people and I पहले मैं सोचा कि शायद नहीं होगा क्यों वो the writers were different और पॉम पॉम इतना बड़ा उसमें शो कि why they would Like you thought कि boomer writers है, boomers लोग को क्या ही पता होगा. हाँ, but then I remember But the then scene. the people who are performing it are young, right? They Yeah, don't know bro what I'm doing. गोगी को देखा है तो मैं जो और कितना साल हो गया कॉलेज में पम 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 ये सब कर रहा है वो लोग. And then I realized कि there was this मेरे को लगता है writers are also young. Because there is scene जहाँ पे दया नहीं होती है, फिर बबीता जी उन लोग के लिए खाना लेके आता है और फिर वो कुछ तो क्या बोलता है, कुछ तो दही डोई टाइप का कुछ दही मिष्टी दोई लेके आता है. फिर उसके बाद जेठालाल को बोलता है जेठ जी आपके लिए मिठाई लगे. अरे ये मिठाई मैंने खाया है. बोलता है कि आपने खाया है? हाँ खाया है. आप ही का खाया है. and जब तुम ऐसा टाइप का बात कर रहे हो, this is तो not even surface level, it's like on your face. Yeah, this is clear flirty. So then I guess कि pom pom was intentional. I'm sure it's intentional bro. It couldn't have been like ये ऐसा intentional नहीं है ये. अरे The writers must have written then and they're like क्या लिखते हैं यार हम तो. वो जो आग जल जाता है ना ऐसा कर. Who the fuck is Aaron Sorkin? वो लोग पहले गाना बनाते फिर उसके इर्द गिर्द वो लोग का वो एपिसोड बनाता. बट पॉम पॉम से मेरे को याद आया कि yesterday or day after yesterday I masturbated day after yesterday today yes, so today नहीं day after tomorrow day before yesterday of course. क्या हो गया यार मेरे को इंग्लिश. Yeah, so day before yesterday I masturbated after a long fucking time. Like maybe 4 or 5 months. Okay. 4 or 5 months you didn't masturbate? Yeah. Why? Then felt like it. Okay. Or that didn't felt like it also. Were you in a relationship of some sort? Yes. Of course you were not, bro. Why am I even asking that? It's not like कि तू side में कोई relationship में और मेरे को नहीं पता. हो सकता है, मैं तुमको नहीं बता सकता. Could be, but अगर तूने मेरे को नहीं बताया तो तू podcast में बता देगा क्या? हाँ, because I'm a content creator. Yeah, so I didn't masturbate it and like also like कि मेरे को एक दोस्त बोला था बहुत साल पहले, मेरे को फिर याद आया बीच में, but that is not the reason. Is like कि वो he was so not he really loved that. Like I didn't think he was, वो एक ही बार masturbate करता था पूरे दिन में स्कूल के टाइम में, but he was not addicted, but he was so passionate about masturbating. Yeah. So he had this theory कि कभी कभी वो 1 महीने तक masturbate नहीं करता है, 7 दिन या 8 महीने, ताकि जब वो करे then it felt good. And I was like वो reason नहीं है मेरा, but it just came in my mind. If you think this is the same way with sex, then it gets weird, bro. It isn't that way. Like if you haven't had sex for a long time and then you go have sex, it isn't any better, bro. You're like भूली गया क्या करना था यार, कौन सा छेद. You're like what the fuck do I do? Which hole? I can't even get hard, bro. Yeah, so I masturbated and like there was this I just found out, एक तो porn निकालने में जो मेहनत लगता है ना, it's a very laborious thing. That's with everything, bro. That same thing is with Netflix. That same thing is with like Zomato, Swiggy, जो भी, and porn में भी, bro 2 घंटे लग जाते हैं कुछ भी देखने में. Like it's that you say ना zigzag bro zigzag तो बोलता है ना कि bro too many options वाला जो. Yeah, exactly. But the हाँ, मेरा एक स्कूल में मेरे को याद है, एक दोस्त था, फिर उसके बाद कुछ डेट पे गया, फिर कुछ खत्म हो गया था. We went out for some to stay at this guy's house. And उसका प्लान था कि 2 रूम था, मैं उसका बाप का रूम में हिलाएगा, वो अपना रूम में हिलाएगा. But at one point of time it just इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा. अच्छा. So he just made a sketch. And it's a घटिया sketch of a woman. And he masturbated to that. और फिर वो मेरे को दिया. मेरे से तो नहीं होगा, देखो ये सब मेरे से होगा नहीं. कितना imagination करने के लिए भी तो एक arbiter की चीज चाहिए होता है ना. And I have never seen a naked woman that time. So मैं क्या imagine करूँ? What was this phase? Like the 2G phase of internet? I guess. Bro 2G में कैसे कर लेते थे bro? I don't know bro. Now if you think about it, it's like high res pictures ऐसा upload होने में टाइम लग जाता था, 1-1 मिनट अपन बैठे हुए हैं. It's like just buffering. फिर तो images upload होने में. for इसलिए मैं वीडियो में तो कभी masturbate नहीं किया towards. I masturbated to videos after I got my personal phone. Okay. उसके बाद तो फोटो या फिर imagination. That's how I became an artist.
इससे ही तो मैं बना है, जो इमेजिनेशन वही ट्रेन किया मैंने। तेरे इमेजिनेशन में इज इट आल्सो लाइक अ स्टोरी कि ब्रो बंदा बंदी ट्रेन में मिले? पहले तो इट वाज लाइक कि तुम जैसे कि जब तुम पॉर्न देखे भी नहीं थे, यू नेवर सीन अ नेकेड वुमन, देन व्हाट्स योर इमेजिनेशन अबाउट अ नेकेड वुमन? यस। I mean, यार मेरे को याद नहीं है because I would have been pretty young उस समय. Yeah, so that's it, and I found it so hard because तुम इमेजिन करते हो क्या, and then sometimes it's your yeah like imagining चोली के पीछे क्या है चोली के no it's so hard because and I know थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, but the only naked woman you have seen in your life is your mother. And whenever you try to imagine, and you haven't even seen her naked as such. You have just seen her breast. boobs. Yes. Yeah. He was a breast boy, but she was a boobs girl. Yeah, so you've seen his breast. Your fucking mother is a trans woman. it's funny जब bro do trans women lactate? अच्छा lactate. Do trans women have tate? Lactate no. नहीं ना? No. It's not fun bro. ये तो एक तो मेरे को and I was कि नहीं वो तो फिर. Would it get weird to you if you like suck titties and like milk comes out? Titties of what? Who? Titties of who बोले तो क्या? किसका होगा? Just imagine the wildest you could go. शेर का titty. Of course a woman bro. हाँ. Would it be weird or it would be disgusting. नमक थोड़ा सा I don't know. I would be disgusting. You'd be disgusted, right? I would be disgusted. Surprisingly तुम्हारा मुंह से कोई भी लिक्विड आता है तो मुंह से नहीं आया, मतलब मुंह से नहीं, मुंह पे. हाँ, so I was saying कहाँ पे था, कहीं से कहाँ चला गया यार. पहले तो you were about like masturbating and then I was like this is good porn I found and there's this beautiful woman. And then I just started masturbating and like I was that peak कि अभी it is going to ejaculate. And I was looking at her and I was looking at her ejaculating and the camera fucking panned up to the guy. Okay. And I masturbated and I felt so horrible. I was like इतना disgusted. I was like कि मैं gay मम्मी यार. And I felt so एक तो मैं इतना महीने के बाद my fucking sperms are dedicated to this man. And he was so bulky and was the ugliest man I've ever seen. Like he surpasses you. I mean, like मैं बैठा हूँ 3 मिनट तक तुम बैठा हो यार. Shit यार मैं तो गया यार. तेरी किस्मत काफी खराब होनी पड़ेगी because like men is probably the non-player character in any exactly porn. And I don't know why the fuck उनको दिखाते भी नहीं है इतना. Exactly. So and the position was she was lying here in the sofa and he was fucking from here. And this is the man. Okay. And he's fucking. Okay. And the camera is here. And the camera fucking ये क्या movement क्या तुम कैसे क्या 8-4 movies bro. And he just went up in a direction and I just tracked the tracking motion also. It just beautifully went up. I was like shit यार मैं तो गया यार. And इससे मेरे को याद इससे that's थोड़ा sexist है ऐसे. क्या? मतलब we just assume कि it's for guys. कि लौंडे के चेहरा दिखाओ ही मत. What if like there are girls watching it? They like कि हाँ bro लौंडे का चेहरा भी दिखा दो ना यार. हाँ बट बोलो यार कैमरा अभी ऊपर जाने वाला है. I guess they need to segregate it. हाँ this is guy porn, this is girls porn. I love like it's अभी थोड़ा सा मैं articulate होना पड़ेगा नहीं तो और इधर हो जाएगा. So there is this porn for women which is not like कि men. It's just two women. No. It's more sensual. Yeah. So there's this porn site which I really like. Yeah. I don't know how to. You wanna endorse it over this podcast? I really like it and I just feel like they have good. थोड़ा सा इतना जैसे मारो बैचो. Hey bro, porn is banned in India. ठीक है? VPN bro. What is like मैं जब भी किसी का फोन में VPN देखता हूँ मैं तो that's the use of this. Yeah. So it's called BELLESA. Okay bro, noted. Yes. सब लोग इसी टाइम यहाँ graphic आएगा ऐसे ठीक है editor. Just put up the graphic. Yeah, they are really good. And बहुत सारे कुछ वो है but वो लोग पैसा मांगते हैं. After you're masturbated, after you've just come, you just outright like
फोन बंद करके छोड़ देता है या फिर what do you do? Because I've realized this thing कि after I've like ejaculated उसके बाद भी थोड़ी देर चलता है हाँ कि like you're in the process of ejaculation yeah and it's going on until your dick gets like really flaccid. नहीं मेरे I'm looking at it. अच्छा फिर नहीं होता मेरे से Yeah. मेरे से जब भी हो गया It's like 20-30 seconds. हाँ But हाँ इतना. yeah नहीं मेरे से तो हाँ वो तो फिर चलते रहता है मैं जितना जल्दी हो सके होम स्क्रीन में जाने का ट्राई करता है जितना मेरा फोन और मैं जितना जल्दी वो कर सकता है देन वी जस्ट गो अलोंग जितना जल्दी बंद हो सकता है ऑल्सो देयर इज दिस guy okay so my friend and it's weird because I don't like this word also weird yeah. So he is in a relationship for 6 months and this girl he was like should I say the previous thing which happened or the latter thing? How would I know, bro? If this is your story, I don't know if any of these serves to the story. Okay, so the latter one, so what he did, like उसको कोई पूछा उसको बंदे ने पूछा कि do you find this girl is his ex? Okay. Do you find her still attractive? It's like कि हाँ जब मैं उसके साथ था तब मैं like she was attractive, but उसके बाद right now I don't find her attractive. And then she said that there's this other girl, okay, and he had a fling with her, and she was really pretty, and like that kind of pretty जिसके वजह से उसका ग्रुप में इज्जत बढ़ गया कि मैं तुम और ये कैसे and she lives now in Australia and she's really pretty woman and she was and she said that what about her and then do you find her pretty? Yeah, हाँ, she is तो very pretty. So उसका मुझसे निकल गया और बंदी उसको टॉन्ट मारती रहती है कि जब वो उस दिन उसको बोला कि you are looking pretty बंदी को बोला फिर then she said that उससे भी ज्यादा वो तो ज्यादा लगती होगी तुमको ऐसा टाना वाना मारा है ठीक है and some shit happened and then she called him that फोन में कुछ बात करने के लिए फोन किया था and he was really busy and वो नॉर्मल टोन में जिस तरीके तुम टोन में बात करते हो I don't know मतलब कि जैसे कि अभी तुमको like I'm busy right now I'll call you later ऐसे हाँ बात कर दो बाद में या फिर बिजी हूँ हाँ ऐसा टाइप का ठीक है and उसका तो फिर उसके बाद थोड़ा देर उसके बाद मैसेज आया कि you are so rude with me ने ये ने वो ने फलाना मैं तुम महंचो ये फिर बंदा का तो गाड़ी फट गया बंदा लिया फूल बंदा लिया डायरेक्ट उसके घर में गया उसका मतलब देयर शी लिव्स इन अ पीजी एंड देन he gave her that flowers and so interestingly there was this one time where when he came to Guwahati and like we're sitting and I just said him that tell her that I never met that girl but she knows that I exist because of course उससे हम लोग ने बुलाया कि तुम हमेशा थर्ड में रहेगा मेरा दो दोस्त है वो पहले ऊपर आएगा okay. उसको हम लोग तो सब लोग बोल के उसको बुलवाया ये बोलो उसको इसको पहचानना चाहिए उसको समझना चाहिए ये चीज and then I just said her that कि tell her that she gives a very fuckboy energy okay and she gives a fuckboy energy and I thought like हाँ fuckboy का एक ऊपर fuckboy energy it's a term okay. Yeah. And she said that he said that and फिर उसके बाद वो बोली कि that's rude फिर उसके how can it's truth थोड़ा तो rude you don't even know her ठीक है but then I just said that and फिर उसके बाद she said that who me लेकिन चूतिया है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हैं मैं उसका बात कर रहा है इसका बात करेगा तुम then she was like कि फिर बोला कि that बोला कि हाँ यू लगे दैट्स रूड एज लाइक कि फिर मैं उसको बोला कि फिर मैं सोचा कि इसके बाद और मजाक करेगा तो ये तो फिर थोड़ा सा फर्क जाएगी फिर मैंने सोचा कि मैंने उसको बोला ये लिख कि शी माइट नॉट बी वन बट शी राइट नाउ उसको मिले बिना she like I have a projection of her that she's a fuck boy so ये लिखने के लिए बोला मैंने and were there something that made you think that she's a fuck boy or several things several things जैसे कि बहुत सारा चीज like being a hoe not being a hoe yeah not being a hoe but other things which comes in that क्या बोलते fuck boy realm yeah. So and she said that ki oh that's if that's so then it's his problem not mine okay.
पहला होता है श्रीमंत सेंटेंस का इट्स प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम बोला ही bit okay and I just give every time a woman is angry we tend to give her a benefit of doubt कि तो गुस्से में है इसलिए पगली समझ में नहीं like she's PMSing right now fuck her yeah but कि मैं क्यों हंसा उस पे मेरे को समझ में भी नहीं आया that's like a period thing a PMS right yeah PMS. So you should not laugh at that. What? You laughed at it. So I was tricked. I was tricked. I thought कुछ तो PCO कुछ तो हो. I didn't figure that. You can laugh on PCOD. No. What could you laugh on? You can't laugh at anyone. Why can't I laugh on periods though? You can't laugh at. Why? Why? This is the girl in me speaking. Because it's a shitty thing? I don't know, dude. Because it's a bad thing? Because it's gross? What? You can laugh. मैं कुछ बोलेगा तो मैं ही बोल जाएगा. Yeah. I'm not afraid, by the way. Afraid of fucking a girl on her periods? I would not fuck a girl on her periods. I would do anal. Okay. Why don't you fuck a girl in her periods? I would. You would, right? Because I have not enough reason to. And that's like the best time to fuck a girl. In fact. Yeah. You don't have to wear a condom. Nice. Yeah. Okay. ठीक है. That's a strong enough reason to fuck someone on her periods. Of course. Of course. Okay. So this happened, and then it's his problem, and then फिर उसके बाद वो मेरे को ही डांट रहे कि तू ऐसा चूतिया तुम बोल मैं चूतिया बोला तुम लिखा बेंच चोद ठीक है तो मैं चूतिया नहीं तुम चूतिया I don't even know your girl bro that well enough you know your girl you know she's a bitch so don't write that right of course and then he was like sorry कर रहा है ये वो कर रहा है बंदी सामने से फोन काटा और बोला कि मेरा मूड नहीं है बात करने को अभी मेरा जब मूड होगा तब मैं बात करेगा तुमसे एंड आई वाज लाइक कि यार तब तो तुम जो फूल लेके गया उससे तो ज्यादा वो जो ज्यादा रूट था वो तो नहीं आई फूल लेके वो तो सीधा मुंह पे बोली वो तो वापस फूल चाहती है वो तो फूल चाहती है कि मेरे को क्यों बोला है and I chose like हाँ this is the advantage she's just taking you for a fool yeah it's like this is the advantage girls have I was like नहीं यार like I just find it so this is the advantage that girls have he said that हाँ अच्छा I don't like when man or woman like puts their other half on the pedestal कि बहन तुम ही है yeah but yeah natural है ना how could you not like if you like date a 10 on 10 she is not 10 on 10 she is not yeah ठीक है but I'm just saying but still if I am a 10 on 10 I वो है ना कि मतलब मजनू की आंखों में तो लैला 10 on 10 ही है ना 10 on 10 है looks में है but if someone is don't put them on the pedestal because फिर उसके तुम्हारे साथ जो होगा फिर वो then it will you won't be like कि अरे वो हुआ and I like अभी जो जिस चीज़ों को तुमको कंप्लेन है या फिर जिस चीज़ों के बारे में तुम लोग का लड़ाइयाँ बढ़ रही है जिस चीज़ों के वजह से you are disgusted on that person you don't like that person वो जो ये सब करते हैं because the fact that you put that on them on pedestal and same goes for women and same goes for men yeah but like would we disagree on that कि hierarchy तो anyway exist कर ही रहा है ना hierarchy exist करता है but just in because any relationship but just because someone is pretty someone has some power you have to have and that what else do you want but you have to say shit कि तुम झगड़ा मत करो you're like you are not making sense and it's not a problem but you are not making sense just I'm saying acknowledging the fact that so if you would have been in a situation and like the girl you were dating was like a 10 on 10 what are the chances you would fall into the same thing no I like कि नहीं I won't like see here's the thing I don't like you would okay but I don't think कि मेरे को depends on how attractive she is if she is like ugly even if अच्छे से बात करे like चल उधर कट टू कट बात करेगी मैं जब बात करेगी तब करेगी तभी मुंह खोलना है it's like what you bring to the table if you are bringing nothing to the table I'm not gonna offer anything I can't bro I can't do that even if she is very pretty and I'm very I mean now you're saying it and I get it but I'm guessing you'd do it
I would cautiously not do that because I very try very hard not to do it. You're like, fuck, I don't want to do it. Yes. Then you're like, but she's so pretty, dude. But I will not do it because the fact that I know that like this will lead like जो जिस चीजों के मेरे को दिक्कत नहीं है, जो चीज प्रॉब्लम अराइज कर रही है उसके लिए मेरे लिए भी is because we put each other in a pedestal कि when you idolize someone, so and every true ऐसे मत वो करो, ठीक है? You look like a fucking leftist. So like the like great loves, like people who are really with each other and they don't idolize each other. And I have a problem with idolization. When you idolize someone, sundar. And if you don't idolize someone, na, to fir you won't even fall in love with them in the first place. No, there is a bigger aspect of that is like idolizing them. No. Being the sort of idea. How? Explain. Like when you like start talking to a girl, you form this idea in your head कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है. She's mysterious. Yeah. Oh, she's pretty. That's she's funny. Yeah. And like 2-3 months into it, this stops. The idealization stops. Then what? But then initially तो idealize करा, इसीलिए तो you fell in love. Exactly. But that's why we fall out of love very much in these days, because we form an idea कि ये इंसान ऐसा, and then when the idea doesn't matches our idea. Agreed, but where do you want to go with that? Or then we're talking about something else here. We're talking about the fact कि what the fuck are we talking about? I am saying that idealization shouldn't exist. You shouldn't have that idea, a certain idea कि ये तो यही है. नहीं, shouldn't वाला तो मेरे को समझ आता है. Like a lot of things shouldn't. I'm saying this happens. But this happens, then you should stop. There are a lot of things which happens. You don't want to. But here's the thing. Something which is healthy and something which is natural. Why it's very hard to stop this thing is because when you fall in love, कुछ तो होता है bro. ठीक है? We can't deny it. We aren't in our senses, bro. We literally aren't in our senses. Yeah, but that's when like see, that's why अक्सर वो सारी गलतियां जो होश में लोग नहीं करते, उस मदहोशी में लोग कर देते. So you should not do that. That's what I'm saying. You should not do that. Of course, something which is natural, sitting in your couch, not doing anything is very natural. But going somewhere, doing some work, working on yourself, that's healthy. So you should do something. Why I'm so passionate? So you should do something, okay, which is healthy. Because if it starts from this, just like मैंने तेरे को एक बार यही I get it, brother. I get it. But what I'm saying is this, that बहुत कम chance है कि you would be able to execute it. ठीक है, don't execute it, be like that, then it's very That's easy. That's the whole point, executing it. But the fact that if you want your love to last, and if you want this thing to be in a certain way, you have to do things in a certain way. That's why it's very hard. In your dating life, have you done that? Yes, I did that. Which one? Which one is it? What did I ask? Did you do that? The fact that you idolized? No, I'm asking like. तो पूरा sentence बना के करो ना, फिर उसके बीच में stop हो जाता है, तो इंसान तो उसमें बोलेगा. Why did you just assume? So fucker, if you form a sentence and you give it 2 minutes pause, उसके सामने इंसान रुका रहेगा क्या, इंतजार ही करता रहेगा. Just ask right. What do you mean? You're like, I just like go forward with whatever I'm thinking. Because the sequence of it, if we're talking about idolization, then the question we comes. talked about 2-3 things and it could have been any of those. No. What it is though is this. Have you been in situations like this guy wherein you've like the girl has done something shitty and so were there instances jahan you spoke up to it, you're like nah dude, this isn't happening? After that there's one particular word which wherein you spoke up to it. No, you're like I won't take your shit. ना ऐसे तो नहीं बात करता कोई. And I'm not I'm not recommending this. I don't take your shit, बहन की लोड़ी, ऐसा नहीं, ऐसे बात. When you there's a communication. How do you do it? I don't I don't take your shit, or alternative क्या? Alternative कम नहीं इंसान बात करता. I don't take your shit is like what you feel inside. Like I'm feeling really bad that you did that, and I don't really appreciate this. So please don't do this again. No. It's not like that. It's just the other option is being a bitch.
Stop being a bitch. नहीं, sometimes this also works. I don't know, but हाँ, I'm not recommending you to go and like say that कि बहन की लोड़ी चुप हो जा या फिर मैं नहीं लूँगा तेरा. Okay. But what I'm saying is Those that are two extremes, bro. बहन की लोड़ी चुप हो जा and I don't take your shit. It's not in the same depends category how you as say saying. it. Like कि How do you say बहन की लोड़ी? ये मत कर. How do you make it? Latter. The like I will not take your shit. It's a भाई कितना भी जोर से कर ले. That's not gonna match up to बहन की लोड़ी. yeah. Man की लोड़ी is a nice. किसने बनाया था ये? बहुत ही सुंदर. कितना Genius गाली है ना. बहन की लोड़ी. First of all, I don't find people जब लोग बोलते हैं ये गाली है and like they get hurt, I'm like ये चूतिया है. तो पहला बात तो ये गाली का सेंस ही नहीं बनता until unless you are trans. So but the fact that इससे प्रोजेक्ट भी हो जाता है, तुम क्या कहना चाहते हो? बहन की लोड़ी is nice slang. And most गालियों का कौन सा ऐसे specific sense बन रहा है यार. Like most गाली is like बोला जा रहा है बस. किसी से गाली का तो मतलब भी नहीं पता है ना. कौन सी गाली का मतलब नहीं पता तेरे को? भोसड़ी के. One that comes from a rotten pussy. अच्छा, nice. Yeah. Okay, भोसड़ी and चूतिया is someone who comes from a pussy but is also retarded. Nah. So someone who is retarded, you can call him chutiya. Yeah. अच्छा, nice. Nice यार. और Shubham, that's not a gali, bro. What? That's like when you want to praise someone, you're like, that's like Shubham. Sorry यार, मेरे को मत बोला कर यार, ये सब गाली वाली दे रहे हो. शोमत का मतलब क्या है? I don't know, bro. ठीक है. कोई ऐसा खास नाम है नहीं कि डिक्शनरी खोल. Yeah. Okay. So हाँ, he does that. And what do you feel about this, bro? Yeah. So you're basically saying कि अच्छा, don't put them on pedestal. What do you think this guy, this friend of yours, should have done in that situation? Not giving her flowers? Not that one. The one that happened after that, wherein the fuckboy one. Where she was like, "Yeah, you're being rude." Yeah, then he just उसके बाद उसने जैसे रिएक्ट किया. It was fine. जब वो उसके बाद वो बोला मेरे को वो बोला कि we just had a discussion जहाँ पे I said that कि शायद like he's not like what you were like thinking of to be, like it was a joke. And अगर तेरे को खराब लगा तो like कि next time से वो नहीं बोलेगा. I will tell him that वो तेरे से ये ऐसा टाइप का बात मत करे. And side में यार, like, who the fuck are you to tell me what I can say and cannot say? Don't fucking breach my freedom of speech. And then he said that कि but if you are telling me कि मैं इससे बात नहीं करे तो ये नहीं हो सकता because he is my friend and like he has came before you. तो he's putting words into her mouth. उसने बोला ये थोड़ी बोला होगा कि भाई इससे बात मत कर. नहीं, हाँ, इससे बात अगले I don't know. This guy was थोड़ा manipulative. He was putting words into her mouth. Yeah, I don't know. उसको bitch दिखाने के लिए. ये भी पता नहीं जब वो ये चीज बोला, मतलब ये भी विश्वास नहीं आया, ये पूरा चीज बोला, ये बोला हाथ जोड़ के sorry यार, sorry to say. क्योंकि उसका reputation है कि he the first time he came in a relationship with this girl in a college, he proposed her 14 times. Okay, and got rejected 13 of those times. Yes, last time I was like, and when he got accepted, I was like, bro, it's not her. She's being irritated. कुछ तो बोले चुप हो जाए. So ये लगे बार लगे पर stalker behavior, bro. Yeah, and then they were in a relationship. अभी क्या करूँ मैं? Like पुलिस कंप्लेंट करूँ या relationship में आऊँ? और पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकता ये इंसान थोड़ा सा, मतलब. And he's such a sweetest guy. वो एक बार and वो दिखने में तुम उसको लगता ही नहीं ये मतलब थोड़ा सा मतलब इतना भोला सा बंदा है कि one time वो उबर से गया था, फिर उसके बाद उसके पास पैसा नहीं था, पर्स छोड़ के आया था मेरे घर ही. तो फिर वो मेरे दोस्त को बुलाया, फिर वो वहां पे, और वो खानापारा में था और मेरा दोस्त रहता है ब्रियाबारी में. उसको बोला भाई आ जाओ यार पैसे देना है. फिर उसके बाद वो आ ही नहीं रहा है, वो आ रहा है बट वो टाइम लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है. फिर वो एक पुलिस ऑफिसर से, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से पैसा वो बोला कि उबर का
उसको पैसा दिया. Never happened in the history, bro. Exactly. That's like reverse bribing. He gave him a paisa to have a cold drink. And अच्छा, then this shit also happened with me once. जहाँ एक पुलिस वाला था, वो मेरी जान पहचान का था. हाँ. And I got caught. I won't recommend it. I had to pay fine. ठीक है. Caught as in? मतलब I wasn't wearing helmet या कुछ तो है ना. I got caught and I had to. तू नहीं था. हाँ, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, मैं होता है तभी तुम कॉट होता है. And I had to pay fine. And जो फाइन काट रहा था, he was a senior guy. And जो junior guy था, I knew him. So मेरे पास पैसे थे नहीं. I was like, dude, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो फाइन नहीं भर सकता. The junior guy was like, वो junior guy जो था, वो रोज मेरे को देखता था, because मैं एक जगह पे जाता था स्पेसिफिक, वो भी वहां आता था. लाइक अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं 500 रुपए दे रहा हूँ, शाम को तू उधर आएगा तो मेरे को दे दियो. 500 रुपए उसने दिए भाई. मैं पुलिस से लेके 500 रुपए पुलिस वाले को दूसरे को दे के आ रहा हूँ. Then you gave him that? नहीं ब्रो, मैं उसको इग्नोर मारने लगा. अरे यार, वो पुलिस वाला आगे बोल रहा है, यार मेरा 500 रुपए का फालतू है क्या? आपका 500 रुपया चाहिए क्या? 500 रुपए घूस मांग रहे हो? वो भी मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मेरे तो हेलमेट भी पहना है. अरे और टेल द थिंग, जब तुम एक बंदी को लेके गया था, फिर उसको डंडा पड़ा था पीछे. नहीं ब्रो, डंडा फेंका था, पड़ा नहीं था. अच्छा ठीक है, जस्ट वेंट. अरे बंदी थी. दैट गुड. अच्छा, आई डोंट थिंक ब्रो डंडा मार देंगे बंदी को. हाँ, मेरे को दिखता भी नहीं था ना वो. मेरे को मारना चाह रहा. वो बंदी की तरह दिखता भी नहीं था ना वो. कौन था? वही लौंडे की तरह कौन दिख रहा था? वही जो औरत, मैं इसका नाम नहीं ले सकता. जस्ट टेक द नेम ना. की तरह नहीं दिखता. हेलमेट पहन के बाद थोड़ी सी मर्दाना दिखती है ना वो. She's got like huge titties. हैं? I don't know. मैंने कभी देखा नहीं उस नजर से. You said you'd fuck her. Yes, I would fuck her. But जब मैं when I would fuck her, then I would look at her. अच्छा. उसके बाद तो मैं ये दोस्त की भाव ऐसा गर्लफ्रेंड है. एक तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बोला जाता ना, बीबी डायरेक्ट. दोस्त लोग का ये सिस्टम होता है. Yeah, that's a you thing though. Yeah, I could segregate. Yeah. तुम बाकी लॉन्डो की तरह बहनचोद बात कर रहे हो, तब भी गर्लफ्रेंड है. बना देते हो. नहीं, गर्लफ्रेंड ही होगा तुम जैसे लॉन्डो का. है या प्रो पुलिस वालों से मेरे को याद है ये सीन हो रखा इधर, जो इंडिया के जितने भी बॉडी बिल्डर्स है, तेरी कॉम वाले. मेरी कौन? आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर. क्या बॉडी बिल्डर नहीं है ब्रो? पूरे दिन तो बोलते रहता है कि जिम जाया करो. नहीं जिम करना चाहिए. इट्स नॉट अ बॉडी बिल्डर. लाइक द वे आई वर्क आउट इज वेरी डिफरेंट देन अ बॉडी बिल्डर वर्क्स आउट. हाउ डू यू वर्क आउट ब्रो? My workout is squats. Bodybuilders do squats. Yeah, it's a strength work, but I train for dance, so it's different. So what are you, bro? I train like whatever. Bodybuilder. These group of bodybuilders. At one point we started flirting with each other. What do you work out? Oh, nice arms. Yeah. अच्छा, ये सारे बॉडीबिल्डर लोग का कुछ तो लफड़ा हुआ है, ठीक है ब्रो. And there's this guy that I recently got introduced to. दल्ला या फिर क्या? Bro, don't say that. ठीक है? कल को वो आएगा और बोलेगा बच्चों नहीं, I don't know. Really, I don't know his name. So this Rajat Dalal नाम है उसका. दलाल. ठीक है? मेरे को पता नहीं है ना. मेरे को कुछ मत देखो ना. And the same thing happened, bro. Wherein this another YouTuber said कि ये दलाल नाम का आदमी है, दलाली कर रहा है, इस टाइप का कुछ बोल दिया. मैं देखो मैं जानता हूँ. आई एम अ सिंपल बॉय फ्रॉम पटाची लंबारी. वो गाली दे दे ब्रो. मार खा के फेमस हो जा. हाँ, मैं पुनीत सुपरस्टार हूँ मैं. मेरे को I got introduced to him by my brother. He told me कि अच्छा यहाँ एक कोई बंदा है और ये सबसे पंगे ले रहा है. कोई भी पता नहीं ले रहा है. अरे कुछ तो होगा, कुछ तो इसको बोल दिया गाली. So I'll tell you an instance जहाँ हुआ था. So apparently 3 बाबा लोग रास्ते में घूम रहे थे, ठीक है, भगवा पहनकर, और कुछ भगवान के नाम पे पैसा दे दे वैसा दे दे, और वो रजत दलाल को मिल गए. रजत दलाल से उन्होंने मांगे पैसे, भगवान के नाम पे पैसे दे दे. रजत दलाल उनको लेके गया अपने घर पे लेके गया, बैठाया, पानी वानी पिलाया, गेट बंद किया, अंदर से ताला मारा, ठीक है, फिर हथौड़ा लेके आया है, ठीक है. वो फिर बोलता है चलो गायत्री मंत्र सुनाओ. अंदर लाइक गायत्री मंत्र तो नहीं आता. बोलता ठीक है हनुमान चालीसा सुनाओ.
लाइक हनुमान चालीसा भी नहीं आता है, लाइक आधार कार्ड दिखाओ. सो अपेरेंटली व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इवन हिंदूज, they just do it because पैसे चाहिए. So these guys were probably You like, went straight of Akshay Kumar bro. You went like जॉली अलग भी चल रहा है, कैमरा लगा हुआ था. वो भी नहीं, he's like the Batman of Haryana. ठीक है, अच्छा. he's like that. अमीरों की गांड मारता है, गरीबों की भी मारता है. But he's like ये सुना वो सुना, and then eventually आधार कार्ड दिखाए, उनमें नाम शायद कुछ हिंदू नाम ही था. So he was like कि जाली आधार कार्ड है, and उनको क्या पेला है ब्रो, वो जाली था, थप्पड़े मारी है. अरे ये तो बिल्कुल मतलब ठीक है जितना भी तुम ऐसा बोलो कि ये इंस्टेंस में तो ये तो फिर वो लोग तो घटिया काम कर रहे हैं, तुम बताओ पारिक. आई एग्री, बट दैट्स नॉट द वे टू डील विद इट यार. देखो सब लोग सुपरमैन नहीं होता. हाँ. बैटमैन का तो वो था भी नहीं. बैटमैन तो क्या बोलता था, वो बोलता मैं मारूंगा, मैं पुलिस को देता, वो भी तो मारता था ना बैटमैन. है तो बैटमैन नहीं है हरियाणा का. सो ये वन ऑफ द इंस्टेंसेस था. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर इन किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया है कि ब्रो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता रजत दलाल से, आके दिखा दे मेरे को कुछ कर ले, एंड दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाता है भाई वो पीटने. एंड फिर उनकी दूसरे तीसरे दिन बाद ऐसे इंस्टाग्राम पे स्टोरियां आती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सॉरी. कौन बोलता है पता नहीं, ऐसे कुछ रजत दलाल बोलता है. नहीं 3-4 इन्फ्लुएंसर्स हो रखे थे ऐसा. सो बाय दिस टाइम, आज से कुछ 20 दिन पहले तक उसका एकदम रुतबा बढ़ गया था. एंड देन दिस थिंग हैपेंड इन यूट्यूब वेयर इन Elvish Yadav and some guy fought, and Rajat Dalal was the mediator जिसने sort करा था. So उसके बाद he came into like limelight as such, where people started talking about him. नहीं शायद मेरे को तो ये सेम ब्रदर भाई लोग कैसे काम नहीं करते. सो वो बॉडी बिल्डिंग ही करता है, मतलब बॉडी बिल्डिंग उसका बॉडी है. हाँ. तो चूतिया सेंटेंस नहीं था, उसका बॉडी है. मेरा बॉडी ही नहीं है. बॉडी तो सबका होता है ना. एंड पीपल आर लाइक सो स्टूपिड, जैसे लोग बोलते बॉडी नहीं बन रहा, पर बॉडी नहीं बन रहा मतलब क्या, बॉडी तो that's a weird thing to say. so बॉडी बना रहा हूँ. So he knows people like these, like जैसे कि ये बंदा हो गया ऐसा कुछ एंड गाय कॉल सिंहा. तो सिंहा के साथ कुछ लड़ाई हुआ था शायद, फिर वो भाई बोला कि बंदूक लेके आ गया. मतलब बंदूक लेके आ गया तो काट. और उसको लगा कि मेरे को भी पता है. क्यों पता होगा मेरे को ये सब. फिर वो बंदूक लेके आ गया, सिंहा को भगाया. एंड दिस फनी क्लिप, मेरे को कॉन्टेक्स्ट कुछ पता नहीं उसका, इन द विजुअल्स वर फनी, जहाँ पे सिंहा मेरे को बहुत ही, मैं अपना गांड से बात करूंगा तो मेरे को पता नहीं है. लास्ट में मेरे को ऐसा कमेंट सेक्शन में कुछ नीचे मेरे को कुछ नहीं पता. तो शायद सिंहा ऐसा बोला कि मतलब ऐसा वो रील ऐसा था कि सिंहा ऐसा बोल रहा कि मागे चूत ऐसा तुम रजत दलाल ये. फिर कट टू होता है जब ऐसा वो गाड़ी में भगा रहे उसको. या दीज आर लाइक प्री, आज से ये पहले हो चुका है. और फिर वो पीछे देख के बोला रजत दलाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है. वो 40 बंदे लेके आ गया. आई नो दैट क्लिप. विजुअल्स आर सो फनी कि वो ब्रो 2 दिन तक तो आई गॉट इनटू दिस रैबिट होल ब्रो. लाइव देखे जा रहा हूं. बट मेरे को ये समझाओ कि सब चीज व्हाई इट्स सेटलिंग टू नॉट doing what they are saying they will do. लड़ाई नहीं हो रहा मेरे हिसाब से. लड़ाई तो कह भी नहीं रहे हैं ना. एटलीस्ट रजत दलाल तो नहीं, गांड फाड़ देंगे सीधे. अच्छा नहीं, हर एक चीज सब लोग लास्ट में जाके हाथ जोड़ लेता है. ये एल्विश यादव बोलता है कि मैं तो सॉरी ही नहीं बोलूंगा, फिर लास्ट में ऐसा बोलता है हाथ जोड़ के मैं सॉरी बोलता हूँ सबको. ब्रो सो ये सीन हुआ था. एंड रिसेंटली जो रजत दलाल के साथ सीन हुआ है, सम अदर बॉडी बिल्डर गाय, दिस इज लाइक पता नहीं मार्वल यूनिवर्स चल रहा है बॉडी बिल्डरों का कुछ अलग ही अपना. सम बॉडी बिल्डर गाय, उसने रजत दलाल को ऐसे बोल दिया था कि तेरे को आके पीटूंगा. एंड वो 40-50 और इन्फ्लुएंसर्स लेके आ गया उसके गांव में. एंड सम शिट हैपेंड. फिर 2 दिन बाद एक वीडियो आता है जिसमें एक पुलिस वाला होता है, एक पुलिस वाला बॉडी बिल्डर ना हो. अगेन बॉडी बिल्डर बट पुलिस वाला. Rohit Shetty would be interested in this story, bro. You could sell this IP to Rohit Shetty. Yes, exactly. Buy it, bro. पुलिस वाला बॉडी बिल्डर जो होता है, he comes out with a video कि ये रजत दलाल जो भी इसको बंद करना होगा कुछ. तो कट टू 2 दिन बाद रजत दलाल का एक वीडियो आता है कि मैं माफी मांग रहा हूँ. ठीक है, मैंने जो भी करा, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूँ.
So अभी अपडेट ही है, ठीक है? Such a man thing to do. It's like कि I see Rajat Dalal as my friend Ritam. वो जब बात करते हैं बहनचोदा I won't take this shit, आज मेरे को ये बोल दिया, आज वो बोल दिया, 3 दिन बाद क्या बोला भाई, मैं शर्मिंदा हूँ आपका इस व्यवहार के लिए, मेरे को रूड नहीं होना चाहिए था, ये लो फूल या बेसिकली दैट ब्रो। सो अपडेट क्या है अभी का? अपडेट यही है, उसने माफी मांग ली एंड देन फिर उसके बाद से कुछ लफड़ा नहीं हुआ। आई एम लाइक डूड अब क्या, अभी तो ये फंसा है ना तो इसमें, और होना चाहिए कुछ। ये तो फिर एल्विश या फिर कुछ वेनम कुछ में ऐसा कुछ तो फंसा है। उसका बाप का इंटरव्यू थे, बाप बोल रहे कि यहाँ पे बाप धोखेबाज कैसे निकला यार? अब अपना बाप ऐसे निकल जाए तो बाप क्या बोलेगा? बाप क्या धोखेबाज निकला? बाप यार मीडिया चैनल्स में जाके वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे बेटे पास पैसे ही नहीं है, ये तो लेता है भाड़े की गाड़ियां, ठीक है, और ये उड़ाता है ऐश, कुछ नहीं है इसके पास, सेकंड हैंड गाड़ियां है। लाइक यार अपने बच्चे की इज्जत का को तुम ऐसे खराब कर रहे हैं। हाँ, युवराज सिंह डिड दैट वे बैक। हाँ, युवराज का बाप पहले ही किया था। क्या बोला? युवराज को बोला? युवराज गांधी? वो तो माही को बोला ना। हाँ, माही तुम्हारा ये छोटा बेटा है। माही बहन चचा भी बोल दे, मैं अलग हूँ। तुम ना क्रिकेट देखता है ना कुछ देखता है, कहाँ का माही हुआ तुम्हारा? वो हो गया भाई, मैंने MS धोनी देखी है, ठीक है, वो तो मर गया। अरे यार बट हाँ, योगराज तो गाली देते रहता है सबको, जैसे कि बहुत लोग माही को नहीं, बाकी लोगों को भी दिया कि मेरे तुम लोग के वजह से मेरा बेटा है जैसा हो। तो वो अलग है बहनचोद, वो अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा है, ये जाके अपनी बेटी की गिल्ली उड़ा रहे हैं। गलत है, मेरा बेटा तो चूतिया है। टाइम पास ही नहीं लगता तुमको, लाइक कहाँ पहुंच गया है, लोग ये सब देख रहा है। एल्विश यादव, और तुम ये बहनचोद ये मुनावर या फिर ये बंदा जो बिग बॉस में जो जीता है, या मेरा तो गांडी फट गया वो जब आया। सारा लोग उसका हाथ जोड़े, अरे मुनावर मेरा बहन का लो। ब्रो कल का मैच देखा, उसमें मुनावर आता है कमेंट्री करने हैं। तो कौन सा तू इंग्लिश कमेंट्री सुनता है? इंग्लिश मेरे को ये आकाश चोपड़ा इतना गुस्सा आता है ना उसको, मैं इतना चूतिया शायरी करते रहता है, इतना चूतिया बात करते रहता है, मेरा दिमाग खराब होता है। मैच देखते हैं तो यार वो शायरी कर रहा है। I don't watch a lot of cricket but I love रवि शास्त्री का commentary। रवि शास्त्री तो I love that bro। रवि शास्त्री उसका वो ना, उसमें देखा था तुमने वो जब वो कोच था तो उसको पूछ रहा था कि कैसा मतलब कि हाउ वाज द पिच, एंड ही वाज लाइक कि हाँ थोड़ा टर्न वन कर रहा था, बोलता है हाँ थोड़ा जब टर्न वन किया तो 2 मिनट के लिए गोटे मुंह में आ गया। बट वेरी गुड कोच बाय द वे। बहुत हिंदी कमेंट्री जो चल रहा था ना उसमें ऐसा सचिन आया हुआ था, सचिन कमेंट्री कर रहा है, जैसे ही सचिन एग्जिट कर रहा मुनावर आया, एंड मुनावर कमेंट्री कर रहा है, सबको लेके आएगा ब्रो, मुनावर बादशाह सबसे कमेंट्री करवा रहे हैं एज इफ दे आर लाइक क्रिकेट एक्सपर्ट्स। बट व्हाटएवर, वो मैं देखा और मेरे को याद आया ब्रो कि 2-3 दिन पहले या जो भी वो हुआ था, मुनावर सचिन को आउट कर दिया भाई। रायना को भी आउट किया। दैट्स लाइक व्हाट द फक, ये क्या हो रहा? लाइक द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम यार, एग्जैक्टली ऐसे आउट कर रहा। सुरेश रायना को आउट किया, उसको आउट किया। ये तो डील भी हो सकता है, पता है, ऐसे पैसे ऑफर कर रहा हूँ मैं आउट करूंगा, कूल होगा। आई एम श्योर ये नहीं होगा, बट हाँ ये रिसेंटली मैं भी वाचिंग दिस थिंग, वो क्या नाम था उसका, लोगन पॉल। हाँ, लोगन पॉल और माइक टाइसन का लड़ाई होने वाला है। लोगन पॉल जीत जाएगा ब्रो। अगर जीता लोगन पॉल देन आई थिंक इट्स फिक्स्ड। नहीं क्यों? माइक टाइसन कितने साल का? 80 साल का नहीं है क्या? माइक टाइसन इंस्टाग्राम पेज देखो ब्रो, द वे ही इज हिटिंग हिज जैब्स, मार चोद देगा इसका ये इंसान का। हाउ ओल्ड इज ही though? He is some in his 50s, but तुम उसका just जो फाइट होने वाला what is it, like boxing? अच्छा, it's boxing, it's straight, ऐसा नहीं थप्पा मार रहा है, ऐसा नहीं ये ऐसा गोटे में हाथ डाल दिया ऐसा। UFC वाला सीन है या फिर boxing? नहीं, it's straight up boxing, and look at his fucking jabs bro, Mike Tyson का, and it is like भैंचोद क्या वो पागल ही हो गया। If he loses, I think he would lose. If he would lose, then it's a contract between Logan Paul and his. भैंचोद उसका लेकिन Logan Paul का तुम दोनों भाई यही कर रहे था भाई, किसी से पंगा ले लो और फेमस हो जाओ। वहाँ का रजत दलाल है वो नीरज गोयाद के साथ हो रखा। बट यार ये रिसेंटली एंड्रू टेट का मैंने वो देखा था, एंड लाइक कि हाँ वो बंदा तो लोग गाली देते रहता है, बट जो वो सही बात बोलते तो अब लोग उसका बात नहीं करते, मेरे को अच्छा नहीं लगता।
But he recently said that how कौन disrespecting गाली it. देता है ब्रो उसको? बंदियां ही तो हाँ, देती है। बंदियां ही तो देती है, but तुम तो तारीफ ही करते रहते हो। नहीं, हाँ, कुछ बातें वो उसका सही लगता है, कुछ ज्यादा चूतिया है, so yeah. मेरे को तो सब सही लगता है ब्रो। सही लगा फिर। Everything he says is like the word of God. या मेरे हिसाब से उसको और बांगा को एक बार मिला के अलग ही वो शूट करना चाहिए। बट ही सेड हाउ डिसरिस्पेक्टिंग इट इज कि अगर What is disrespecting, bro? Just randomly shit out words. बोलने दो मेरे को, मैंने तो पॉज भी नहीं लिया, तुम तो पॉज लिया तब मैं बोला, मैं पॉज भी नहीं लेता, तुम जबरदस्ती घुसाते हो। Bro, like you say something and then you're like, this is disrespecting. You start with, this is disrespecting. This is disrespecting. Sorry. What sort of structure is that? Sorry, even? मेरे को माफ कर दो, तुमको फूल चाहिए। Yeah. ठीक है। Yeah, so then like he was asked that कि अगर तुम मतलब कि अगर तेरे को माइक टायसन के साथ लड़ाई करने को बोलता तो करता, तो तेरे हिसाब से कौन जीतता? फिर वो बोलते कि ये तो घटिया बात हुआ, अगर आज माइक टायसन जो मेरे से कितना उम्र वो है उसके साथ मैं लड़ाई करूं तो हाउ डिसरिस्पेक्टिंग इट इज, एंड ही वुड स्मैश मी इन, बिकॉज एंड्रू वाज आल्सो अ फाइटर, सो ही वुड हैव स्मैश्ड मी इन हिज प्राइम, and to fight with him when he is not in his prime and is not even boxing, that's a bit disrespecting. मैं यही बोलने वाला था, बस disrespecting के साथ मैं backward जाने वाला था बस। So वही। I sort of disagree, bro. Disagree? Why you disagree, शिवम पारिक, with Andrew Tate? And because Mike Tyson ने खुद ने बोला है ना कि ब्रो ये फाइट करेंगे अपन, so Mike Tyson भी तो अपने दिमाग में हो रखा ना बहुत ही egoistic कि भाई मैं तो हरा ही दूंगा। पैसा दिया होगा, उसको पैसा का जरूरत होगा, वो गरीब हो गया, उसको तो अभी पैसा नहीं मिलता, सो क्या करता? अपना टाइगर बेचना चाहिए ना भाई। टाइगर मेरे को कोई बोले हेवन को बेच दो, मेरे कुत्ता को बेच दो, मैं बेच दूंगा पैसा के लिए। बता, नहीं बेचूंगा मैं पहले अपने बाप को। What's the fucking price for heaven? Nothing. Come on, I'll give you an offer you can't refuse. give me. That's just a Godfather line, bro. Yeah, I wanted to say. So हाँ, but you won't sell heaven. No, I won't. I might sell you. नहीं, मैं तुमको भी नहीं बेचूंगा यार। अब ब्रो तो बेच भी नहीं सकेगा। You don't own me in the first place. I own you. You're my bitch. Yes. Let's end it there then. चलो।